कि आप कुछ बड़ा करो। ओके, आपको छोटा छोटा चीज करना है। जस्ट बाय स्पीकिंग अप टुडे, यू विल सी, यू विल ओपन अप समथिंग बिग इन योर लाइफ। ओके, विद दैट दीदी, यस Yeah, प्लीज टेक। so welcome everyone in today's Tribe Meetup. Thank you to each and every one of you for joining in. So why we are here? This is a very interactive session and this is our group, this is our tribe. So we all are here to intermingle with each other. For now, as of now, as Soumya ne bola, कि we are here to make you speak today, make your intuitive mind very active. It is not that you are, see, when we are, overthinking about something, कभी भी कोई situation आता है ना, we keep on ruminating on that. So we are actually wanting you not to ruminate on these things. क्योंकि जब हम ruminate करते हैं ना, हम अपने कॉन्शियस माइंड को लेके आते रहते हैं, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा, तो उसके पीछे ना एक स्टोरी बनती जाती है, assumptions होते जाते हैं. So what we want is we want to activate the intuitive part of ours which is there for everyone. सभी के पास वो intuitive mind रहता है. जो आपको पहली बार जो आपको थॉट आता है ना, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड से आता है. लेकिन जब आप उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हो, किसी भी चीज में ज्यादा टाइम लगा देते हो, तब आप वहां पर गड़बड़ करने लग पड़ते हो. क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड आ जाता है, आपका जो है ना लिम्बिक ब्रेन एक्टिव हो जाता है, वो आपका आगे फियर आ जाता है कि मैं कैसे बोलूंगी. जैसे कि हम लोग अभी अपने ट्राइब में, कम्युनिटी ग्रुप में हम लोग चैलेंजेस दे रहे हैं कि ये वाला चैलेंज है, टुडे यू हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, टुडे यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द वेरी फर्स्ट डे व्हेन एवरीवन स्टार्टेड, दे वर काइंड ऑफ इजी कि मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, जज करेंगे. तो वो सब कब होता है? जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तब आप कॉन्शियस हो जाते हो. बट धीरे धीरे करके सभी आए, आगे आए, सामने आकर बढ़ चढ़कर अपने आप से बात करी. बिट्टी जी तो वहीं पर रिकॉर्ड करके तुरंत भेज देती. नाउ हमने ये भी बोला था कि अब आपने ऐसा करना है कि यू डू नॉट हैव टू टेक एनी रीटेक्स, जस्ट स्पीक आउट व्हाट यू वांट टू से. सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पता चलता है कि आप कितना ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो. जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, बहुत बार मैंने आपको इस बात को बोला है कि प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहते हैं और ग्रैटिट्यूड को फॉलो करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपकी यूं 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 होती है. तब आप ये भूल जाते हो कि यू हैव टू क्रिएट अ गैप बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ टू बी इन फ्रंट ऑफ अदर्स. You forget to maintain that gap and you just blurt what is there, whatever is there coming from your subconscious mind. तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए: स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, being authentic about what you are, and speaking directly from your subconscious mind with gratitude. तो ग्रैटिट्यूड का सबसे पहला मतलब यही है कि आप प्रेजेंट में हो, आप वहीं पर हो, जो आपसे बोला जा रहा है आप उसी को सुन रहे हो. जब आप उसी को सुन रहे होते हो तभी आप उसके प्रति उसको आंसर दे पाते हो. सो इंट्यूटिव माइंड को जानने के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बैंक ऑन द इंट्यूटिव पावर दैट वी हैव. और उसको करने के लिए आज आप सभी को एक चैलेंज दिया जाएगा. कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, आप सभी बारी बारी करके उनको, एक क्वेश्चन नहीं होगा, सबसे डिफरेंट डिफरेंट सवाल होंगे, और उसमें से आप पिक करके बिना सोचे समझे जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आप बोलोगे. इट विल बी समवॉट लाइक एन एक्सटेम्पोर, बट डू नॉट गेट अफ्रेड, फियर को लाना ही नहीं है. यू ऑल आर वेरी मच एलिजिबल टू डू एनीथिंग. किसी भी तरह की कोई भी बात हो, कोई भी टॉक हो, आप आराम से कर सकते हो. यू आर वेरी वेरी कैमरा कॉन्फिडेंट एंड यू आर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ पर कोई किसी को जज करने के लिए नहीं है. हम सभी के सभी एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म में है, जहां पर जस्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है? तो आज हमने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके इंट्यूटिव पावर को बढ़ाना है. उसके लिए हम लोग प्रेजेंट मोमेंट पर रहेंगे, बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल किए अपने सवालों के जवाब देंगे. कॉन्शियस माइंड में खाली आपके कान काम करेंगे, बस इतने ही. कानों का काम रहेगा आपका कि वो आपकी बातों को, जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुन पा रहे हैं. ठीक है? तो आज हमने ये करना है. So with this we start our session and I hope that everything is clear to you. So I and Soumya and Thara welcome each and every one of you in today's session. So guys, उससे पहले let us just do a छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं. हल्का सा डीप ब्रीदिंग करके अपने इंट्यूटिव पावर को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं. ठीक है? तो आराम से हम लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पे. Guys, we request you to switch on your videos for today's session. This is It's mandatory. very important. Yeah. It's This is very mandatory. important for you to switch on the cameras.
है ना? Because that is how you will be able to open up. When you open the cameras now, the doors of abundance will open up for you. The communication channels which is there in your mind, the various communication channels. See, every organ of yours is communicating with the other. So all those communication channel will open up for you. Okay, Suman is in kitchen, so she cannot. But still, Suman, you may try to come up, and then you can switch on the camera, of course. Okay, now, yes, Yogita, I'll just want to mute you for one instance. Thank you so much. क्योंकि disturbance हो जाता है. Thank you, Mithil, for joining, muting you for some time. Okay. Yeah. So let us just take a deep breath. Close your eyes. Kirti, absolutely fine. Let us just shut our conscious mind for some time. Present is really a present. Let us enjoy the present. Present is the truth. Present is the only reality. The past does not exist, and the future is still in your mind. Whatever is now is your presence. So, the power of your breath, the power of presence, is connecting your body and your mind. The subconscious part of yours will get activated when you switch off the conscious mind. So just invoke yourself completely. Close your beautiful eyes and take a deep breath. Let all that power go and sit into your belly. The belly should come out, and hence the vagus nerve of yours gets connected with your subconscious mind. Open the direct channel of communication with it. Inhale and exhale through your mouth with the sound ah. Relax, no fear, no hurry. We have forever to be here. Inhale again. And exhale. Inhale and exhale. Now see on the top of your head the divine light, which has lots of wisdom and love, floating like a cloud on the top of your head, nurturing you from outside and inside. You know everything. This light carries everything, all the knowledge, all the wisdom, everything from the universe is trapped and transferred to you
to your subconscious mind. For 1 minute, you just see that light, golden light, traveling within your body, radiating your subconscious mind, opening up all the channels for you. The light is spreading inside you. Just affirm that I am blessed. I am the best. I know answers to all the questions that has been asked to me. I am flawless. I am having lot of patience. I speak love. I listen to love with all the wisdom. With this, take another deep breath. Let all that energy go to every tip, every corner of your body. Take your hand, feel your heartbeat, put it over your heart. With lots of love in your heart, open your beautiful eyes with a smile on your face. This smile is of confidence, is of love, is of transparency, of authenticity. Whenever you're ready, just open your eyes. Thank you, beautiful people. Love to you. Okay, so the rule is हम एक सवाल पूछेंगे और आप अपने आप को सबसे पहले वॉलंटियर कर सकते हो हु वांट्स टू कम फर्स्ट और उसके बाद अपना आप वर्चुअल हैंड रेज करके आप आगे आ सकते हो यू विल गेट 45 seconds to 1 minute to answer. You do not have to think over it. जो भी हो आपके सामने क्वेश्चन आपने सिर्फ उसका आंसर देना है और बहुत शॉर्ट में आपको सिर्फ 1 मिनट ही दिया जाएगा और उसके बाद आप दूसरे पर्सन को चुन सकते हो कि अगला आप किसको अपनी लाइक यू हैव टू पास द बेटन जस्ट लाइक पासिंग द पिलो you have to pass the baton and you can name any person from the group who has to from this group obviously the 20 here we have 17 people so you can name anyone and that person has to speak. ठीक है सो ठीक है समझ में आ गया गेम के रूल्स बहुत आसान सवाल होंगे इट कैन बी एज इजी एज हु यू आर है ना जैसे कि मैं अनीशा को बोलूँगी अनीशा हु आर यू सो अनीशा हैज़ टू से हु शी इज़ है ना और वो जो शी होगा व्हाट अनीशा इज अनीशा विल नॉट से दैट आई एम अनीशा नो बिकॉज वी ऑल नो दैट अनीशा इज अनीशा बट बियॉन्ड अनीशा हु इज शी. She might be a daughter, a lovely daughter to her parents. She is a great mom to her children. She is a wonderful wife. She is a wonderful, person who has a very great communication skills. She is my friend. Whatever comes in her mind, she has to say that.
इतने इजी सवाल होंगे वो, और आपको उनके जवाब देने हैं. आई गेस इट्स क्लियर टू एवरीवन. सो एनीवन हु वांट्स टू volunteer for being the first person? दीदी यू पिक द नेम एंड ब्रिंग देम फ्रंट, नहीं तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर उसी में. अल्फाबेटिकली ले लो. नहीं, then it Alphabet. becomes very predictable. We want unpredictability to be there. चलो मैं चूज करती हूँ, मेरे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री है. Okay, I'll Okay, be the first. I'll be the okay, first. okay, Kirti, that's great. Whoever Great, Kirti. comes first, great. Like you have Yeah. opened something huge in your life. Definitely. And yeah, कीर्ति का भी हमारा स्पॉटलाइट में करते हैं कीर्ति को. Okay, Namrata is in the airport. Happy travels, Namrata. Okay, so Kirti already is in the spotlight. And Kirti, the question to you is, just a moment. You want me to put the question up front, or may I ask you the same? मैं पूछ लूँ Whatever आपसे? you want. कुछ भी, कुछ भी. Okay. So, Kirti, what is one desire you rarely say out loud? This is, I want to, sometimes I want to shout, solid shout, and happy and cry at the same time. Okay. That is the one desire that you have. You really want to shout, right? Okay. So Yes. that was the first question to you. What helps you to reconnect with yourself? So talk to you people and to sit quietly. Great. What does your body need today? Rest. Knew it. When do you feel lost? Quite since last quite a month, you can say. I feel totally lost due to bombarding from everywhere, as you can see. Mhm. What is your heart trying to tell you these days? Be happy, be calm, everything will be fine very soon. And I'm the luckiest person because I have gems in my life, like you people, who is What my makes you feel alive? to listen your classes and to be happy always, Hmm. and my What family. part of yourself are you trying to understand better? What I want, I want to think means I'm not clear about that. Sometimes I'm so confused. Sometimes that's what I want to know about. You want to understand yourself better in that case. So great, great, Kirti. You have been flawless. Thank you so much for this and a really wonderful performance. So, yeah, clapping to you. And whom you want to choose the next? Um, just a sec. Aarti Bhatia. Great. Aarti ji on the spotlight now. Guys, और एक चीज, whichever line she says and you resonate, you can see I see you, I feel you, beautiful. You आप can just jam. chat box में आप डाल सकते हैं, है ना? So that you are encouraging. You can do reactions as well. So you're cheering each other. ठीक है? All the best. Okay. So, Aarti ji, your questions here. What is in your mind right now? Enjoying your sessions. That is main concentration just right now. What is your biggest desire? To be financially independent, What does financial independence mean to you? to be free to what I feel like purchasing or my desire. I just want to fulfill that without uh, Do you looking at, think you are a responsible citizen? yeah, definitely. How do you feel yourself to be a responsible citizen of India? How do I? Okay. Mm, So you want to make me say something regarding this, or shall we go to Yes, the please. next question? Yes, please. Yeah, I would. Okay. I want you to. So what do you do to make, see, if you are casting vote in time, then you are a responsible citizen, right? If you are Yeah, not throwing dust and garbage anywhere, then you are a responsible citizen. If you are helping people around in and contributing to the economy, you are a responsible citizen, right? yeah. So this was the question. What makes you a wonderful wife? Just taking care of all the people, all the members of the family very perfectly. Where do you see yourself blessed?
where do you see yourself blessed, in which area, as a mom or as a daughter or as a wife? As a mom. As a mom. Great, great. So what are the contribution you are making in your family as a mom? Hmm. I just don't, I should say, I won't allow anybody to be low in any situation. I just always encourage them to be, everything will, this time will also pass if there is any challenge or something. I just make everyone, all is well, and everything will be perfect with time. Great. Lovely, lovely. Lots of love to you, Aarti ji. Wonderful Thank you performance. so Guys, you much. may cheer, जैसे Thank कि सौम्या you. ने भी बताया. आरती Thank you जी so से जहाँ much. जहाँ आप रेजोनेट करते हो, आप प्लीज उनको cheer करते हैं, और all the thing that is there for you, है ना? होता है ना, हम किसी से Thanks. जब रेजोनेट करते हैं. So Aarti ji, whom do you want to nominate now? Biti ji. Fine. So Bitti ji, Soumya, can you please put her on the spotlight? Yes, Didi, she is in spotlight now. Okay. Gary Lammy Bitti. slow. Yes, yes. So, Bitti, when you trust your inner voice, your outer voice becomes unstoppable. How? Because I'm very determined about my decisions. What Hmm. I want to do, I have to do. Okay. So now you are using your inner voice or outer voice? No, inner voice. When and how you feel that you have used your intuition and you got benefited due to it? Mm, Many times in a day, कई बार दिन में ऐसा होता है कि मतलब पहले ही पता लग जाता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, या बोलना चाहिए कि नहीं. बहुत बहुत बार दिन में पता चल जाता है. Okay. आप If I ask you to write a book on yourself, in what subject you would write? I write on my There are different areas of your life, na? yeah, there are Yeah. different areas. I love to write on the patience, on the softness, humbleness, जो मेरी strength है, तो मैं उसके ऊपर ही लिखना चाहूंगी हमेशा. What It is your works for me. weakness? My strength is my patience and my humbleness. And what is your weakness? My weakness is to be people pleasing, or sometimes like कई बार बात जैसे आती है और हम बाहर नहीं आती है, तो समटाइम्स अंदर हाँ किसी चीज को नहीं बोल पाती हूँ समटाइम्स. Great, 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 lovely. पहले से तो Very बहुत honest. फर्क है, लेकिन अब तो काफी कह लेती हूँ, बट पहले तो बहुत होता था मेरे साथ कि मैं कुछ भी नहीं कह पाती थी. So, Bitti, I'll ask you one question and you have to give 3 different answers. Okay. Who are you, Bitti? I am a Don't think. ह्यूमन बीइंग. आई एम अ ह्यूमन बीइंग. मैंने हर तरह से हर रिश्ते को अलग तरह से निभाया और सबसे मुझे इक्वली प्यार मिला है, भले मैं एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ एंड एज अ वाइफ. One line, please. हाँ, तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग. Who are you, Bitti? आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. Who are you, Bitti? आई एम वेरी इनोवेटिव. Great. Lovely. What is your sole job, Bitti? टू सर्व पीपल. What is the difference between helping people and serving people? Helping people is like physical thing, and serving people is like physical holistic thing, I think so. Okay. Helping people means you are on the top, that you are the giver and you are helping. Serving people is the two-way thing. You are giving and receiving. Right? Okay. Okay. So thank you so much. Lovely, lovely. बिट्टी की तो रैगिंग याद आ गई, बिट्टी को जो कॉलेज में हुई थी. Thank you so much for being so honest. Really, really, really admire you, for being so honest about it. So there's a very thin line between people pleasing and being able to talk with confidence and compassionate. So you were very vocal about that. So kudos to you. Thank you so much for this. Thank So whom do you want to nominate for the next? just a minute. Suman ji. Suman ji. Perfect, perfect. Suman is in the room now. वो kitchen में थी पहले. Yeah, she is on the screen. तभी मैंने बोला.
Okay. Are you available, Suman ji? Okay, great. Great, Suman, great. Suman, what does financial abundance mean to you? Do not think फाइनेंशियल about it, just say it. उनको स्पॉटलाइट कर दो, पहले मुझे हटा दो. Acha, 1 second. जो चाहे वो कर सकें, जहाँ चाहे वो जा सकें, Okay, जिसको मैं चाहूँ सर्व कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ. perfect, perfect. Suman, who is your favorite actor and why? ऑल टाइम अमिताभ बच्चन. Why? ग्राउंडेड. He's grounded. Suman, if you are given a chance to become the Prime Minister of India, what will you do? नेपाल का पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगी. नेपाल का पूछेंगे. आपने तो क्वेश्चन यार कोई पकड़ लिया. आई एम इन नेपाल, सो आई विल लव टू डू फॉर नेपाल एक्चुअली. Okay, डोंट great, माइंड great. So it just slipped my mind also. अचानक से question आया था. Fine, perfect. एग्जैक्टली. So, Suman, if I tell you to serve Nepal in whatsoever way, what way will you find for yourself? टू सर्व इन नेपाल, टू फाइंड जॉब्स एजुकेशनल फील्ड में, टूरिज्म में. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव इन माय माइंड. Okay, the first thing for helping in tourism or in education? बोथ साइड बाय साइड, दोनों जरूरी है. ठीक. इनकम इज ऑल्सो जरूरी एंड एजुकेटिंग यूथ इज ऑल्सो. So you are in a buffet. There's a platter in which like there are so many cuisines. Which cuisine will you try first and why? इंडियन. Hmm. आई Why? लव इट. Because आई जस्ट लव इट. बचपन से okay. खाया. तो खाना तो इंडियन पसंद है पर नेपाल में रह रही हो, नेपाल का कोई खाना नहीं पसंद? लेकिन एक वो रूट में होता है ना जीन्स में, वो कि वो चीज चाहिए तो वो चाहिए. Okay, great. लेकिन सर्व So, जो करने की बात आई तो जहां मैं पली बड़ी हूँ उस कंट्री को मैं सर्व करना चाहूंगी. वहां hmm, पे मोदी जी हैं, आप लोग हैं, कई लोग हैं. perfect. So, Suman, if you are given a chance to go for a world tour, which is the first country that you want to visit? ग्रीस. Greece. Great. Okay, so if you are given a chance to meet one actor, other than Amitabh Bachchan, of course, whom would you like to meet? रेखा. Okay. So yeah, thank you so much, Suman. Lovely answers, impromptu, lovely, lovely. Thank you so थैंक much. यू प्रिया. Yeah, thank you, thank you. So whom do you want to choose next? मी. Yeah. सौम्या. Great. Okay. So putting भी खेलना Soumya है in this. ये गेम. अच्छा ठीक है, चलो लेट्स प्ले. This game was for मैंने बोला था 17 लोगों को चूज करना है. हम तीनों को छोड़ दिया था. ओके, सौम्या अब पूछना पड़ेगा आपसे भाई, हमारे सुमन जी ने आपको नॉमिनेट किया है तो ठीक गेम है. ऑन, गेम ऑन. गेम You ऑन. have bundle of questions to ask from Soumya. She Okay, so actually knows all the answers to what I have to answer. that's why I want anyone else to ask the questions to Soumya. कौन Soumya, you can पूछेगा? pass to any other person if you want to. Sorry. Okay, you can pass on to any other person. Soumya, what is the change that you're feeling right now being married? Identity merge. Two identities merged together? Hmm. Two or more? Currently just 2. Others are in the process, but 2 are merged completely. If you have your mom and your mother-in-law both at the same time, both of them are going somewhere and they want you to go with them, so whom will you choose and why? अभी तो मदर ही है, मेरे मदर, क्योंकि the pull is strongest right now. Eventually I'm sure it will be both of them because I feel she's no different and वो हो रहा है, अभी प्रोसेस है, अभी 3 ही दिन 4 ही दिन हुआ है, बट प्रोसेस है, बट मेरी मदर को पहले होगा for sure. Perfect. So another thing is, if you are given a chance to work with Google Head, would you want to go and work with him? Leaving Brain to Body Revolution. No, I'll work Of with course, Google it's Head a from brainchild. Of course, it's your brainchild. I'm sure you will not. never. I will go to him and train him from brain to body, but I'll not leave brain to body.
Okay. So, if you are given a chance to go and meet Mark Zuckerberg, whom would you like to go with? With you. I wanted to listen to my name. That Okay, would be great. So, yeah, thank you so much, Soumya. Lovely, lovely having you. Thank Thank you so you, much. Sumanji, for nominating me. Thank you, thank you. And Suman, there's a privilege to you if you want to ask any question to Soumya. Yes. So how do you take your married life? As a challenge or as an adventure? As a day-to-day life. ये ऑप्शन Neither. नहीं था. But I'm feeling it neither adventurous, neither anything. I'm just feeling it as something that I'm continuing doing it. That's it. Like it has its own feel good things and everything, but it's not, oh, मेरे साथ कुछ नया हुआ है. It doesn't feel like that. It feels like, अच्छा ठीक है. ऐसे acceptance. Acceptance la. Lots Lovely. of love and blessings to you, Soumya. Thank you so much. Thank you. मेरे को था एक game. I was just as soon as दीदी started asking question, you sorry यार मेरे को भी खेलना है. I just thought and Suman ji, you made it happen. Thank you. Okay, Soumya, you have the privilege to choose someone else now. I can see on my screen Anisha, so I'll go with her. I'll spotlight her. Perfect. Okay. Lovely, lovely. So, Soumya, you want to ask something to Anisha now? Okay. What does Anisha mean to you? Anisha means to me a person who is a empath and a learner and a curious person. Mhm. If you had to choose one planet to live on, which would that be? Earth. Why? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. But if you could live, and all 9 planets are habitable. Right now, you're thinking Earth is only habitable, but no, No, I all know, 9 but planets are habitable. I I believe know. absolutely. So I will go with the known devil than the unknown devil. I want to play it safe. So Safe. yeah. Why do you want to play safe? I'm not a person who takes a lot of risks. So I would feel this is safer. What's your worst fear? Worst fear. In relation to what? I mean, not in relation to the planets, no? Worst No. fear. What's the My biggest worst, fear? no, my biggest fear, I fear dogs a lot. So I just feel के पास ना है, बस दूर से अच्छा है. मुझे पास में नहीं चाहिए कोई भी कुत्ता बंदा. Lovely. So, what is that one belief you want to change in you, Anisha? I want to let go of fear of a lot of things, I think, no? Because I don't know, I just feel that. Belief, happening. belief, belief. What is the one belief that I want to keep? Change in you. Change. Yeah. Mm. Hmm. The belief I would want to change is that, something is not achievable, which is just a mindset, but I don't think it is there anymore. Like I'm working towards everything is attainable and everything is achievable. So that is one belief that I'm changing. So, what decision felt right that you took, even if you were scared about it previously? Started going to new places alone, you know. Wow. So that. Amazing, amazing, amazing. Lovely, lovely. Thank you, Anisha. Great presence of mind you have. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So, whom would you like to project the next one? Pallavi. Ah, yes, Pallavi. Lovely. Okay, Pallavi. What part of you is healing right now? My lower part of the body. What is one habit that changed your life that you think? Meditation. Wow, lovely. Okay, what makes you feel alive? Conscious breathing. Wow, lovely. So what was the last sign that you felt in synchronicity with universe? This is like recently I had a conversation, like we had one-on-one, and I told you, right, what was going on in my mind, and you did that to me. Yes, That that. was nothing but synchronicity.
Yeah, definitely. It was synchronicity. Great, great. Yeah. Okay. So, what is that one desire that is a common desire for everyone, but you do not have that? I do not have a. Hmm. Okay. No A rare think. desire that you think that no one has, but you have that. Sorry, repeat that. You changed the question. The question is, Tweak it. there is a common, see, everyone has got a desire now. Everyone wants to have Correct, successful correct, life, and now someone correct. wants to have Yeah, a yeah. wonderful partner. What do Yes, you yes. want? Hmm. Financial abundance. That is also a common thing. Everyone wants that. Ask anyone here, everyone will Okay. want that. Yeah. Yeah, yeah. I think. Much thinking, too I, much Okay, I. we do thinking not have to happening think. Yeah, here. yeah, yeah. Okay, Actually. great. So, now, yeah, last question to you. What Mhm. is your heart trying to tell you nowadays? I have That is to your present work. self-talk. I have to work more on myself to reach my destination, the goal. Lovely. Perfect, perfect. Amazing. Claps. Okay, so who next? Thank you. Thank you so much for joining. No, I can say Anshul. I can see that was the first name I saw. Achal. Okay, Achal. Yeah. अच्छा, let us give a privilege to Pallavi to ask one question to Achal. जो भी एक को nominate करेगा ना, पहला question आप पूछिए. ठीक है? Pallavi, you ask something to her. Yeah. I want to ask, you asked like, what's the difference between serve and help? I want that more clarity on that question. Can I ask that? Yes, definitely. Okay. Anshul, go ahead. So the question is the difference between serve and help. Yes. Okay. So serve is when you don't have a feeling that you get anything in return, you are just giving. And the other thing is that when you have an expectancy that I'm helping someone and one day there is a chance, other person will also help me. Okay, great. Wonderful. Thank you. Wonderful. Lovely take, huh? Lovely. So, Achal, just tell me what makes you feel safe? Being with my parents. Oh, lovely. What thought did you wake up today with? My mama was not at home, so I need to rush to work, so I had to do everything on my own. Okay. So with that only. Okay. What memory gives you strength and weakness, both? I Different. had Hmm. past relationship challenges, so they gave me strength Hmm. that I can do everything on my own. And Hmm. then the emotional part is my weakness as well. Okay. So, what is something you know without any logic? I feel I'm not of this world. And that is illogical, you think? Yeah, it is. Okay. One very important question. What is something you have outgrown quietly? And this Suppressing is my a question to emotions. everyone also, huh? What is something you have outgrown? Suppressing my emotions and my thoughts. Now you don't? बहुत हद तक रिकवर हो गया है, but I'm still working on it. ग्रेट 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 ये आंसर जो है आप सभी को अपने आप से पूछना है and you have to introspect on that. What is something you have outgrown quietly? So, Achal, now tell me, what part of yourself are you trying to understand better? What is that part of yourself? Controlling my thoughts. What kind of control you want to have in your thoughts? The Can you things which are control your not thoughts? relevant, I don't want to think about them. Things which are relevant, I want to focus on them only. I was in a habit of constant daydreaming and putting myself into that negative loop of thoughts. I just want to give a stop to it now. I have given actually, majorly, I have given a stop to it now. So I'm having a charge of my own thoughts and emotions and my own feelings. So it's my feelings, my thoughts, my thing. So I need to focus on that. Not putting my thoughts on anyone or not investing my energy on anyone. Until I ask you for your time and you do not have time, what will you answer me? I want to take an appointment from you, Anchal. I really want to meet you, but you really do not have time. What will But you I would say? love to meet you. I cannot think beyond that. And if Okay. anyone wants my time
or seeks my for taking any kind of help from me, any advice from me. So I would do anything to help that person. Even if you have got other things, other engagements? Yeah, I'll focus still on that. If somebody needs me, then I will be there anyhow. Wonderful. Lovely going, Aanchal. Lovely presence of mind. Thank you so much. Whom do you want to name the other person? Okay. Yogita. Yogita. Lovely. Yogita, yes, मैं can we मैं please, मैं Yogita, एक if you are सेकंड के लिए, comfortable? हाँ, एक्चुअली ये मेरी टीम में अभी नई ज्वाइन होने वाली हैं अच्छा, और हाँ, अभी ज्वाइन भी नहीं किया हमें, और मैंने सोचा कि ये माइंड जिम से रिलेटेड होगा और मैंने इनको लिंक भेजा और इन्होंने ज्वाइन किया। मैं वेलकम करती हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ इनकी। थैंक यू योगिता, थैंक यू। I आप पहले भी always आए थे, लेकिन हमसे बात नहीं हो thank you पाई so थी much. आपकी। तो Thank ये you जो so much काम for the कर रहे हैं ना, opportunity to speak. जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, ये भी माइंड जिम से रिलेटेड ही I'm है। audible? Yes, perfectly audible you are, Yogita. Thank you so much. हाँ. Okay, so Yogita, first of all, Okay. would you like to introduce Thank you yourself? so much. If everyone wants to know me, definitely I would love Yeah, to. definitely. We would love to know you because And you are the person. extremely. Voice. हाँ, Yeah, वॉइस there is a डिस्टरबेंस disturbance. है, डिस्टर्बेंस है। आपको ब्लूटूथ just leave निकालना your पड़ेगा। hand from the mic, please. Leave your hand from the microphone. Okay. हाँ. Still it's there. आप ब्लूटूथ को रिमूव कर दीजिए अगर योगिता हो सके तो, if you can. नॉर्मल हेडफोन्स निकाल के बात कर सकते हो आप। Yeah, the अब noise is ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है अभी योगिता। अब क्या? बढ़िया। हाँ जी, ओके, बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आई एम एक्सट्रीमली introvert personality. First of all, I love to being with myself on, to understand me with my soul, my body, and I know when to open for others. So I'm just always aware ki when to come in, come out. So that awareness, I always love that, and I'm always being with the around. Matlab, I understand this whole world, people, how to live, what to do, our responsibilities and all. So I just want to explore myself on the other side, where all the how this universe work, how they are reacting, how they are connecting with us. So I want to be I want to be connected with them to understand, and I want to help people. I want to grow myself more, and I want to take next birth with high energy, with end of the all karmas and all. That's Okay. it. So So, I'm just so if you concentrating want on that, how if to you have improve that goal to myself. help people, है ना, if you have that goal to help people and all, so this is the first platform that you can be, है ना, you are here to help people. I We know are, that. आपको कोई और जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी जन्म में सब कुछ कर पाओगे. That is very clear. जो Right. पॉजिटिव और जो हाई एनर्जी की बात है ना, वो हम सभी में है, सभी में है. It is just we need to Right. focus our energy on, right? So you do not have to take a rebirth to live your entire life. You can do anything and everything in this birth only, and we will make you do that. We will make you realize that your subconscious mind has got all the power to do anything and everything in this world. When you talk about being introverted, that doesn't mean that you are not talking to people. Your job, when you want to help people, you have to talk, you have to communicate, right? When you are not communicating now, in one sense, Yogita, you are actually getting yourself आप अपने आप को दबा रहे हो. Lack of expression should not be there. You introverted होना बहुत अच्छी बात है. You are introverted, that's the nature. But then you need to express yourself also ना. आपको अपने आप को बात करना पड़ेगा. किसी की बात को समझने के लिए उससे बात करना पड़ेगा. And communication is the truth of the nature. Everything is communicating with each other. No, everything. Your body parts internally are communicating with each other. है ना, उनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर होता है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. व्हेन यू आर होल्डिंग योर फोन, नाउ नॉट विथ टॉकिंग, इवन इफ यू आर होल्डिंग दिस ना, तब भी आप इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो.
कभी भी कोई भी एक्शन आप ले रहे हो तो आपका वो कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो कम्युनिकेशन तो हमारा होता ही है। एंड नाउ व्हाट वी आर मेकिंग यू डू इज, आप अपने जो आप बोल रहे हो ना लोगों की बात करने की क्षमता को डेवलप करना, तो दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उससे अवगत करवाना ही हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। सो आर वी रेडी टू गेट इनटू द चैलेंज नाउ? आप आंसर्स Of आप course. पार्टिसिपेट करना चाहोगे? ग्रेट ग्रेट, लवली, Yeah, yeah, थैंक यू sure, सो sure. मच। I थैंक यू love सो to. मच। Okay, so Yogita, we would like to know who are you? Without your name, of course, we know you are Yogita. Yogita के अलावा और क्या क्या आइडेंटिटी है आपकी? She's a free soul. She is not having any fear, and she's a extremely explore person and very helpful, and she Lovely. want to help everyone. Perfect. Amazing, amazing, amazing. So, what Thank you. thought did you wake up today with? You did not know that you are going to come here. What was your thought when you woke up today? That magic and miracle session is going to start, and I have to do that So sweet. anyhow. So sweet. Lovely, lovely. What makes you feel safe, Yogita? Okay, That we'll pass sound on is that. getting break. That question I can't able to hear completely. Okay, what makes you feel safe? Safe. Yeah. When I'm with me, I'm spending time with me, I'm feeling more safe. Okay, when you are with others, you do not feel that. I feel, but still I don't ज्यादा know. कंफर्टेबल अपने साथ फील होता है ना? हाँ, मुझे अपने साथ मतलब मुझे मेरी कंपनी ज्यादा सेफ लगती है। Okay, great. So, what is one thing that you want? एक चीज prioritized. प्रायोरिटाइज हमारे बहुत सारे डिजायर होते हैं ना, कोई एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है अभी? माय ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी डे टू डे मुझे जो भी टास्क आते हैं, आई जस्ट वांट टू मेक इट कंप्लीट with my all good efforts and with the happiness. I want to end that all the tasks. ओके, ग्रेट ग्रेट। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फियर क्या है? पहले थे, अब नहीं है। अब अभी कुछ नहीं भी है, फियर मुझे नहीं है? अंदर डर नहीं है, अभी कोई भी डर नहीं है अभी। आई एम फियरलेस। परफेक्ट, यू आर फियर्स, हाँ? ग्रेट ग्रेट योगिता, थैंक यू सो मच। योगिता को किसने नॉमिनेट किया था? आप प्लीज आप एक क्वेश्चन पूछिए योगिता से, देन वी से बाय। आंचल, Aanchal. यू आस्क्ड योगिता ना? यस। Aanchal. आंचल, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू योगिता? आंचल, ओके, आंचल शायद नहीं है। I think she's busy. ओके, ठीक है। हाँ हाँ, शी इज No, ऑफ द I'm here. I want to ask a question. पूछो Cool, पूछो cool. जल्दी। Just a second. Okay, so I Thank want to you. ask Yogita, what makes you happy the most? What make? What makes you happy the most? Something that brings joy and excitement in you. When I'm meditating myself, when I'm completely thoughtless, no thoughts, nothing. So I'm very happy that That's time. a state of peace. Okay, very Love nice. Great, that. lovely. Love that no thought, Love, nothing. love that. Very That is the nice. real meaning of ecstasy, actually, when you are Thank, thoughtless. हाँ, Lovely. actually. Thank you for Great. coming, Yogita. Thank you. We loved having Thank you. you. Thank you so Welcome, much. So, Yogita. Thank you. so Thank you so it much. is 7:06. We have got quite a few people now. Yogita, whom do you want to give your baton to? नीरा है, जिनको अभी तक नहीं मिला है कोई क्वेश्चन। मोनिशा जी हैं, मनीषा है, एंड मोनिशा ज्योतिर्मय तो जी, स्टेशन में मेरी है अभी। मोनिशा जी। मोनिशा जी, ओके मोनिशा जी, यस, आप पहला क्वेश्चन पूछिए मोनिशा जी को। मेरी मोनिशा जी, वाओ। हाँ जी, आप पूछना चाहते हैं कोई योगिता हाँ, क्वेश्चन? मोनिशा जी, हाँ जी। if one thing, if you'll get a chance to change in this world, entire world, what you will be change that? मोह, अटैचमेंट।
नो अटेंशन। मैं बदलना चाहूंगी। मोह से ही हम फंसे हुए हैं बस। मोह, ग्रेट। ये फीलिंग डिटैच, फीलिंग निकालनी है। वो फीलिंग ही दुख दे रही है, वही फीलिंग ही सुख दे रही वेरी है। ब्यूटीफुल, लवली। क्या आंचल का भी आंसर ये है। लवली। हु ऑल रेजोनेट विद मोनिशा जी अभी? किसको किसको डिटैचमेंट सीखना है? 100%. Perfect. Amazing, amazing, amazing. Yes, Great. yes, yes. Okay. Yeah. थैंक यू योगिता। Lovely question, Yogita. Thank you. So, Monisha ji, what memory gives you strength? इतना नहीं सोचना होता। वर्ड वर्ड नहीं आ रहा। मतलब मुझे जो लगता है कि मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, दिस इज द मतलब कुछ मेमोरेबल मोमेंट जो था ना वो। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब आपसे वही सवाल जो आपने हम सबसे किया था कि ऐसा कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट है आपका, वो आपको अभी हम लोगों को बताना है। ओके, हम्म। तो उस टाइम की बात है जब यूट्यूब और फेसबुक थे नहीं, या मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं था कि मैं उससे हेल्प ले सकती। तो क्योंकि मैं योग इंस्ट्रक्टर रही हूँ, तो मोस्टली मैं स्टेज कंडक्ट करती थी। तो एक बार मुझे ऐसे ही मौका मिला, कोई खास दिन था, तो उस दिन शहर के जाने मैं पहचाने काफी लोगों को बुलाया गया, जिसमें से एक जो हमारा चीफ गेस्ट थे, तो उनको मैंने स्टेज पर बुलाते हुए बोला कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान सो एंड सो, राजेंद्र प्रसाद जी उनका नाम था, जिन्हें आप अक्सर शोक सभाओं पर देखते होंगे। शोक सभा? तो कम से कम 500 बंदे सामने मेरे थे, सब ठहाका लगा के हंसे। तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। अभी मुझे इतनी स्टेज की वो नहीं थी। मैंने उस सिचुएशन को संभालने के लिए खुद भी किया, और बोला कि हाँ, क्योंकि यही वो इंसान है जो हमेशा हर किसी के दुख में खड़े, सुख में तो हर कोई खड़ा मिलता है, ये हर ग्रेट, किसी संभाल लिया दुख आपने। हाँ, संभाल लिया। पर वो एक सेकंड के लिए इतनी एम्बैरेसमेंट मतलब सिचुएशन थी कि 400-500 लोगों के आगे मैं एक बहुत सिंपल लेडी है ना, उन्होंने मुझे योग में जाते ही मुझे उन्होंने स्टेज कंडक्ट की ड्यूटी दे दी। मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं कोई वहां पे सीखने वाला नहीं था। ज्यादा से ज्यादा मैं मैगजीन्स और अखबार ही पढ़ती थी, न्यूज़पेपर, है ना। अब तो बहुत सारे एप्स वगैरह ऐसी हैं, यूट्यूब है, हेल्प कर देता है। तो उसके बाद मैंने मतलब ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो आए इंसान और मुझे उनके, और मैं उनको देखती थी शहर में, मैं ओके। उनको देखती ही हर बस शोक सभा मोनिशा में जी, वो आज होते आप थे। बस, हमारे थैंक पास यू 1 मिनट है, ठीक है? थैंक यू सो हाँ, मच, एक और थैंक यू। सवाल का जवाब दे दीजिए हाँ आप हाँ। बस, ठीक है? कि आपको अब कौन सी चीज रियलाइज हो रही है दैट यू हैव स्टार्टेड सो स्लोली एक्सेप्टिंग? व्हाट इज द ट्रूथ दैट यू हैव स्टार्टेड स्लोली एक्सेप्टिंग अबाउट योरसेल्फ? कि मैंने दूसरों के लिए अपना समय गवा दिया, जो समय मुझे खुद को देना चाहिए था, मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देकर मैंने औरों को दी। बट मैं ओके, इसको ग्रेट, कवर कर रही हूँ। लवली, वंडरफुल। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हाजिर जवाबी। थैंक यू। आप किसको करना चाहेंगे वॉलंटियर के लिए? प्रिया को। अच्छा। ये तो नहीं है, मेरे पास तो वाइल्ड कार्ड है। प्रिया, तारा है कि नहीं? तारा पूछेगी क्वेश्चन। बौछार। मोनिशा घर ओके, भी रहती हैं, मोनिशा घर भी रहती, मनीषा। मनीषा गर्ग रहती हैं, फिर हमारी हाँ मितल रहती है। मितल, आर यू स्टिल देयर? सौम्या, इज मितल देयर? No, Didi, she's left. जीत और ज्योतिर्मय भी एनी भी है, साथ एनी, संजू भी, एनी भी रहती हैं। एनी रहती है। सो हम लोग क्या एनी संजू को है, बुला मीरा सकते है। हैं अगर हाँ, मोनिशा एनी जी को की बुला लेते हैं। इजाजत हो तो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलो, को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। या, थैंक यू एनी मैम। एनी जी, पहले तो स्माइल करो बड़ा वाला, जैसे व्हाट क्रिसमस है। ईयर टू Just ईयर। smile, just smile as या if it's Christmas. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन No, no, I'm requesting you personally from my end. ओके Smile as if ओके ओके श्योर श्योर She is, yeah, या she या is smiling. Okay, Monisha ji, you go ahead and ask your first question. हाँ, मोनिशा जी, या।
मैंने Okay. आपके एनी जी मैं तो देखो Yeah. अब नेचर लवर हूँ तो उसी से रिलेटेड पूछूंगी। आपने एक दिन वो दिखाए थे ना अपने मनी प्लांट की बेल दिखाई थी। Yeah. आप उन प्लांट्स को देखकर अपने आप को उनसे कैसे रिलेट करती हैं? दोनों के बीच का बताएं। Yeah, they are my lifeline, you see. They are like my bachas, and they light up my life. Wherever I go, somehow I put some plants, even in water. So without that, I can't light up my room. I can't light up my life. I don't Love. put any artificial plants or flowers. Great, Very great, good. great. Wonderful, wonderful. Thank you. Yeah. So what is a fear you are learning to let go of, Annie? What is the fear I'm learning to let go? That now when I was working or when I was studying, I was quite disciplined. Now I have a lot of my time. I'm not using my time. That is my fear. Okay. I'm not using my time properly. Okay. What makes you imperfectionist? What makes you imperfectionist? Everything. Like I don't aim on perfection now. Earlier you used to, na? Just do it. I Earlier just you do used it. to be a perfectionist, but now I want to ask you ki if it is imperfection, where you see yourself being imperfect. Imperfect in managing my time, in managing my relationship, especially with my close ones. So is it okay to be imperfect now? What is your feeling? It is okay to be imperfect, but sometimes I have my disappointments when things are not going on my way. Fine. So do you think the things will always go your way? No. Can we control everything? No. What does surrender mean to you, Annie? Surrender means not looking at the results, just taking life as it comes. Very good. Very good. So do you follow that when you say that? No, not all the time. When I Not all don't the follow it, I get agitated. Okay. So what helps you to reconnect with yourself? Taking up my hobbies, traveling. What are your hobbies? My hobbies are just digital designing, then cooking, stitching. Okay, great. So when did you feel lost last? Today only, I told you, I was feeling little sad for no reason. Sometimes I can't figure out why. Yeah, it's okay. It's okay. That's nature. What is your heart telling you nowadays? Average self-talk, daily self-talk. What is it? You can do better because Lovely. I see Priya, Soumya and all. You have conquered many of your this thing. So even I can do it. Otherwise, I Definitely. never used to believe in meditation and all. But Now ever you've since started believing it? no, ever since our last one-on-one talk, I started believing, Great. Great. That is the only truth, actually. Connecting with yourself. That is the only truth. And that way you can not just help yourself, but the people, but the surroundings, but the environment. Everything is within you. All the answers are within you. The questions that you're asking Soumya, me, or anyone else, everything is within you. You go to physics, you are such an avid learner of physics. And you have, guys, she is an MTech. So she has got so much knowledge about physics and everything. So I must tell you that even physics says that everything has begun from one point and everything is going to one point. So we all are same, our subconscious minds are same, and we are all going towards that. So we are all same. Whatever answer you are seeking, you already have that. You just have to sit with yourself, get connected with yourself, and everything comes to you inadvertently. Yeah. Thank you so much, Annie. Thanks so much. You gave me a chance to speak then. Thank you so much. Yeah, Okay, thank you. who do we are left with? जिसने अभी बोला नहीं है. Manisha. Manisha. Manisha, Neera. Didi, we can do one thing. We'll put all of them on spotlight. You ask the same question, let them all answer one after the other. Okay, okay, great. Annie अपने पसीनों को Manisha को पोंछते हुए. spotlight. मनीषा है, नीरा है. नीरा जी हैं. जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को ऐड किया जाएगा because we want the video.
Okay. और कौन है? और संजू तो तो रेलवे स्टेशन में है. Sanju is in railway station now. Okay. Jyotirmay Raha, somebody. Yeah, Jyotirmay is there, but he is not traveling. He is in station में है अभी. He's in the station, Okay, na? okay. So he will not be able to rest. Rest of all are done. Okay, so Manisha and Neera, lovely. Thank Yes. you for being here, Manisha. Manisha तो बहुत ही अभी बोल रहे हैं हमारे हर एक चैलेंज को यूं फटाफट से एक्सेप्ट कर रही हैं ट्राइब में और Yes. सबसे Yes. she is the first one to answer all the time. Yes. And Neera always is a lovely person. So Soumya, you want to go with the first question? Oh, thank you, Di. What is that one word that would describe you? One word. Self-love. Neeraji? Confidence. It's good. Awesome. Thank you. Lovely, 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 beautiful ladies. So, Neera, I would ask you, who are you beyond being Neera? I can describe myself. See, I've got a very clear. I'm a We very do not clear want person. description, we just want Okay. one or two single lines. Okay. Hmm. Clarity is always in me because whatever I think, I want like जो भी मैं सोचती हूँ वो मेरे बाहर होता है. मतलब कि ये नहीं है कि जो मतलब कि my heart is very clear कि अब जैसे कोई सामने होता है कि जब तक मेरे दिमाग में होता है कि ये बंदा क्या बोलेगा या क्या कहेगा, सो जे किसी को दुख भी पहुंचता है तो आई गो एंड क्लियर विद दैट. जे मैंने हर्ट किया है किसी को तो मतलब how can I explain myself? I don't know, but कोई बात नहीं, हम I'm a समझ clear जाएंगे. like a mirror. I can say that. मतलब कि मेरे Okay. मन में किसी के लिए कभी मैं Mirror, सोचती see, हूँ mirror is कभी not clear. One surface of mirror is opaque, right? Annie या ma'am? One surface of मेरा a mirror is वो opaque. है कि अंदर से मुझे लगता है कि या okay. So mirror means you are saying I whatever don't know you how are. to explain. है ना? Transparent means that you are transparent. Yeah. You are मेरे जो actually मन में बात होती है मैं कह देती हूँ. बोल देते हो. maybe. Yes. Whatever is in my mind, Wonderful. it is out. I can't keep anything inside me. I want to say that. Great, lovely. Okay, Manisha, who are you beyond being Manisha Garg? I'm a homemaker. Yes, I'm a Manisha, mo- who are you? I'm a mother. Manisha, who are you? I'm a wife. Manisha, who are you I'm in an your career? amazing person in my career. Yeah, I'm a homemaker. wonderful. So, what is that one thought that you have outgrown of now? जजमेंट. अब मुझे किसी के जजमेंट से डर नहीं लगता. मेरा कैमरा ऑन रहता है. मेरा वीडियो सबसे पहले आता है. चाहे ग्रे हेयर हो, चाहे मैं कहीं भी बैठी हूँ. I am overcoming it and I'm in अपने आप Absolutely से loving प्यार this करने part. लग गई हूँ मैं. Lovely, lovely. Yes. Neera, what about you? What is that one thing that you have outgrown now? I love myself. मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और पहले नहीं करते थे आप? मतलब करती थी लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा जीती थी. जैसे कि अब मुझे लगता है कि अपने के लिए जीना बहुत जरूरी है कि आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ थोड़ा सा और थोड़ा स्पिरिचुअल. आई लाइक मेडिटेशन नाउ. मतलब कि आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. उससे क्या है कि आई एम फीलिंग बेटर देन व्हाट आई वाज. Great, great. So, Neera, what was your in the morning? What thought came in your mind for the first time? आज तक कभी भी वो thought नहीं आया था. आज वो thought आया. वो क्या था? आई विल ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट्स. ओके, पहले नहीं आया ये आज वाला थॉट? नहीं होता था कि नीचे भी गिरती थी ऊपर भी जाती थी. आज मुझे लगा कि मुझे सारा दिन अपने आप को एक अच्छे वाइब्रेशंस में रखना है. मुझे लो नहीं फील करना. आज मैंने सोचा था आज ही कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ इन हाई वाइब्रेशन टुडे एंड आई केप्ट इट टुडे. मुझे जरा सा कुछ होता था इधर तो आई जस्ट केप्ट इट. नहीं ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है. तो तेरे को बी इन हाई वाइब्रेशन. यस. ओके. सो मनीषा, किस चीज से आपका दिल जो है ना वो हैवी हो जाता है? दिल हैवी हो जाता है जब मैं अपने नियर डियर वंस को दुखी देखती हूँ. तो मेरे को लगता है सब बहुत खुश रहें. भगवान उनका जो भी हो वो मुझे दे दे, वो लोग खुश रहें. Wonderful. Yes. So, Neera, do you think that recently you had an intuition and you worked upon it? Intuition on what you are talking about? Any kind of intuition, जैसे कि वो काम होने वाला है और वो हुआ नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ. आपको लगा वो काम नहीं होना चाहिए था और वो नहीं हुआ. यस. एक्चुअली अभी मतलब कि मेरे ऐसे था कि अभी हमारे जैसे अभी शादी थी मेरे बेटे की. तो 2-3 दिन पहले एक्चुअली जो हमारा डेकोरेटर था तो ही वाज मैनिपुलेटिंग समथिंग. ही सेड कि मैं करना नहीं चाहता बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज समथिंग. देन आई सरेंडर्ड. आई सेड भगवान मुझे पता है ये होगा ही होगा, कैसे ही होगा.
एंड समबडी इंटरफेयर्ड इन बिटवीन, और वो काम ऐसे इतने स्मूथली हुआ ना कि जैसे मैंने सरेंडर किया, इट हैपेंड इट विद इन फ्यू आवर्स, एवरीथिंग वाज सॉल्व्ड व्हाट आई थॉट, एंड आई वाज वेरी ग्लैड एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने उस वक्त सरेंडर कर दिया। मैं कहा मुझे नहीं पता भगवान, जो ये हो रहा है अब मुझे नहीं पता, मैंने सरेंडर कर दिया। नाउ सी यू सी की व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड रियली इट वाज सॉल्व्ड इन फ्यू आवर्स। Wonderful, wonderful. One last question to Manisha. Manisha, last sign of synchronicity with the universe. क्योंकि अगर मैं वाइब्रेशनली हाई रहती हूँ तो सब चीज मेरे लिए वर्क करती है। मैं मॉर्निंग से अगर ग्रेटिट्यूड में उठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेरी अपने आप एनर्जी हाई होती है, मुझे लेट गो करना आता है, रिस्पॉन्ड करते रखती हूँ रिएक्शन की जगह, और वो अभी हो रहा है रिसेंटली मेरे साथ। मतलब you are in synchronicity always, huh? यस आई एम। और जब जिस दिन मेडिटेशन और सब कुछ कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ तो वो दूसरा रिजल्ट भी मुझे हाथों हाथ मिल जाता है। तो मुझे यूनिवर्स कहता है तू डिसिप्लिन कर, तेरी लाइफ बहुत स्मूथ है, बस तेरे को विंग्स मिले तो फ्लाई कर ले। Wonderful. Yes. Lovely, lovely. Thank you so much, beautiful women. Thank you so much. Lovely, lovely, lovely participation. Lovely. Thank you so much, guys. It was such a wonderful interactive session. We got to know each and every one of you. ज्योतिर्मय से बात नहीं हो पाई, कभी उसको फिर लाएंगे हम लोग बात करने के लिए। So यही था आज हमारा उद्देश्य कि हम आपके अंदर से आपका जो वो वाला भावना है ना, कि जो जज नहीं है, जो किसी के लिए जज नहीं है और खुद के लिए जज नहीं है, उस इंसान को लेके आए। जज कौन होता है? जब अब किसी भी जगह में कोई जजमेंट अगर पास करता है तो उसका मतलब ये होता है उसने सुना, समझा, फिर उसने एनालिसिस किया। दैट इज व्हाई वी कॉल जज अ जज। बट व्हेन यू आर talking to your subconscious mind, when you're talking through your subconscious mind, you do not be a judge. आपको कब जज करते हैं लोग? जब आप खुद को जज करते हो, only then people judge you. So you stop judging yourself, you stop advocating yourself, then you start living in the present moment. Only then your life will actually be magical, when you start living in the present moment, leaving the robe of a judge and of a vakil also. Yeah. So guys, thank you so much for being here. And last word, Soumya, what would you like to say to everyone? Yes, आज दीदी, के लिए लास्ट आज के लिए लास्ट इतना ही है कि आज आपने जिस माइंड से आंसर किया, उसी माइंडसेट से आपको आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। बस फटाक से पूछो और फर्स्ट जो आंसर आता है वही आंसर है। आपको हमारी जरूरत नहीं है, किसी गुरु की नहीं। इट्स जस्ट दैट वॉइस दैट यू हर्ड व्हेन वी आस्क्ड, व्हेन दीदी आस्क्ड यू दोस क्वेश्चन एंड सुप्रिया आस्क्ड यू दोस क्वेश्चंस, राइट? Who are you? Whatever that Awaz said you, that is what you want, and that's approval is what you are all seeking. आपको हम जब वन ऑन वन काउंसलिंग कर रहे हैं ना, हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट आपको वही चीजें सही लगती है जो आपकी इनर वॉइस बोल रहा है ना? हैव यू गाइस फेल्ट दैट? हम बोलते हैं अगर एप्पल खाओ, अगर आपका अंतर्मन एप्पल खाने को बोल रहा है तभी जाके आप एप्पल खाओगे, हमारे बोलने पे नहीं खाओगे, ठीक है? सो इंट्यूशन पे निर्भर होकर आप जो भी डिसीजन लोगे वो हमेशा 100% आपके लिए बना हुआ होगा। इट इज 100। आई विल नॉट यूज द वर्ड राइट बिकॉज देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? सो गुड लक using the intuition and live your life with intuition. And how can you bring your intuitive power into activation is by connecting with yourself, by staying in the present moment, by following the breath work, right? So we all want you to activate the intuitive power of yours so that you do not take much time to decide on something and just go on with the intuitive power. And for every question, just ask your subconscious mind. You will get the correct answer every time. So thank you so much. For more clarity, you can please come again Friday 6 p.m. every week. We will be having this tribe meetup. Thank you for joining us like always. And Brain to Body Revolution is your tribe. Please be with us. Please like the subject that we actually keep on sharing in YouTube and in Instagram. Follow us, like us, and love us. That's what we want. We love you. We want to be with you always. Thank you so much. Love you all. Thank you for a wonderful session. Thank you so much, Neera. Thank you so much. you. Thank you, everyone. Love you all. Have a Wonderful great session. weekend. Thank you for all your love. Thank Thank you for all your love. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.